Hi, how are you all? Do you know every single verb has three forms, and these three forms can be quite tricky for any English language learner in his initial period of learning the language. हर verb के three forms होते हैं और ये three forms confusing हो सकते हैं because sometimes these three forms are completely same. See, cut, cut, cut. And sometimes these three forms are vastly different, like go, went, gone. Sometimes there is a subtle change, like arrive, arrived, arrived. And sometimes first form is different, second and third form are same, like catch, caught, caught. In certain words which end with Y, the letter Y is dropped, like study, studied, studied. In some words which end with the letter Y is not dropped, like play, played, played. It sounds confusing, doesn't it? But let me tell you one thing with all assurance. This topic is not as confusing as it seems. एक बात कहता हूँ यकीन से कि इतना मुश्किल नहीं है. I bet you can learn easily this concept, provided you watch this entire video. आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं शर्त है कि आप पूरा वीडियो देखें. First of all, do like, subscribe to my YouTube channel English with Aqib Safi Qasmi. In this video, I'm going to cover three things. What is a verb? What is a regular verb? And what is an irregular verb? What is a verb first of all? Verb is an action. जो भी हम काम करते हैं वो verb है. जैसे खेलना, कूदना, लड़ना, सोना, खाना, पीना. इन शॉर्ट उर्दू में जो भी लफ्ज़ ना पे ख़त्म होता है हम उसे verb कहते हैं. Our second question is what is a regular verb and what is an irregular verb? What's the difference between these two? Let me tell you one thing honestly. When I pose this question to my new students, 9 out of 10 give me the same answer. जब मैं सवाल करता हूँ अपने तलबा से कि रेगुलर में और इरेगुलर में क्या फ़र्क है, तकरीबन मुझे यही जवाब देते हैं. क्या जवाब देते हैं? They say regular verbs are more frequently and regularly used than irregular verbs. कि regular verbs ऐसे फेल हैं, verbs हैं जो irregular के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. As a matter of fact, the reverse is true. हालांकि irregular ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. जैसे खाना irregular है, पीना irregular है, सोना irregular है, देखना irregular है, किसी से गुफ्तगू करना स्पीकिंग ये irregular है, किसी से लड़ना फाइट ये भी irregular है, कोई चीज़ खरीदना irregular है. Now tell me, do we not perform these actions on daily basis? क्या हम ये काम रोज़ाना नहीं करते? Then why do we call them irregular? हम उन्हें irregular क्यों बोलते हैं? The answer is we have classified regular verbs and irregular verbs not based on their usage but based on their formation. हमने जो तकसीम की है रेगुलर वर्ब्स की और इरेगुलर वर्ब्स की, ये तकसीम के इस्तेमाल पे नहीं है बल्कि वो जो फॉर्म्स बनते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म उसकी बुनियाद पर है. लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर वर्ब. पहले पढ़ते हैं हम रेगुलर वर्ब के ताल्लुक से. अ रेगुलर वर्ब इज़ अ वर्ब विच हैज़ ईडी एंडिंग इन इट्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसके सेकेंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में ईडी आता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर. आर्ग्यू बहस करना, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड. अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड. आंसर जवाब देना, आंसर्ड, आंसर्ड. गारलैंड फूल पहनाना, गारलैंडेड, गारलैंडेड. फ्रिस्क तलाशी लेना, फ्रिस्क्ड, फ्रिस्क्ड. कंपेल मजबूर करना, कंपेल्ड, कंपेल्ड. एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड. काउंट गिनना, काउंटेड, काउंटेड. फियर डरना, feared, feared. Praise तारीफ करना, praised, praised. I gave you 10 examples and I hope you might have understood what a regular verb is. In all these verbs, one thing is common. Second and third forms are same and they both end with ed. यानी second, third form same होता है और आखिर में उसकी ed आता है, तो ये है regular. तो we have learned one concept so far. Let's move on. अब बात करते हैं ऐसे वर्ब्स की जिनके आखिर में वाई आता है. लेट्स सी दिस वर्ड स्टडी यानी पढ़ना. इफ यू सी Here Y is followed by D.
And what is D? D is a consonant. D consonant है. Okay, let's get back to very basics of English. Vowels and consonants. ये दोनों में क्या फ़र्क है? Vowels are called free flowing letters. Vowels ऐसे letters है जो free flowing है. What do I mean by free flowing? Free flowing means when we pronounce them, our upper part of the mouth and lower part of the mouth do not come into contact. जब हम ये 5 A, E, I, O, U को बोलते हैं तो हमारा मुंह बंद नहीं होता. ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा मिलता नहीं. See, A, E, I, O, U. And the best thing is we can pronounce all 5 of them in one go. हम एक साथ थोड़ा बोल सकते हैं A, E, I, O, U. On the contrary, we cannot pronounce more than one consonant. हम नहीं बोल सकते B, K साथ में नहीं बोल सकते कब. हर टाइम, every time you pronounce a consonant, the upper part and the lower part of the mouth come into contact. मुंह का ऊपर और नीचे का हिस्सा मिल जाता है consonant के अंदर. तो आपने समझ गया consonant क्या है, vowel क्या है, और vowels 5 है हमारे A, E, I, O, U. तो whenever Y is followed by a consonant, Y is dropped. Y हम निकाल देते हैं. Study से studied, studied. इसी तरह let's see some more examples. Carry, carried, carried. Cry, cried, cried. Apply, applied, applied. Marry, married, married. Dry, dried, dried. In all these words, one thing is common. They all ended with Y followed by a consonant. Now let's talk about another category, and that is play. Play में क्या हो रहा? Y is followed by a vowel. Y खत्म हो रहा vowels के बाद. अब जब vowel आता है Y से पहले तो हम Y को ड्रॉप नहीं करते. We keep it as it is. वो जैसा उसे वैसा ही रखते हैं. Let's see some more examples here. Delay, delayed, delayed. Enjoy, enjoyed, enjoyed. Destroy, destroyed, destroyed. Stay, stayed, stayed. Obey, obeyed, obeyed. Now I think so far you have understood कि Y को ड्रॉप कब करना है और कब नहीं करना है, और रेगुलर वर्ब किसको बोलते हैं. Let's move on to irregular verb. Before starting the topic of irregular verb, let me give a quick recap. As I told you, a regular verb is a verb which has ed ending in its second and third form. On the contrary, irregular verb is a verb which does not have an ed ending in its second and third form. जब second third form में ed आता है तो regular है. जब second third form में ed नहीं आता वो irregular है. Let's see some irregular verbs. Go, went, gone. Come, came, come. Hear, heard, heard. यहाँ पे D है लेकिन E नहीं है. Okay? तो जो जिसके आखिर में ed नहीं होता second third form में वो होता है irregular verb. These irregular verbs do not follow any set pattern. Nobody knows how go became went and when became gone. किसी को पता नहीं go से went कैसा बना, went से gone कैसा बना. This is how native speakers use and this is how we follow them. इसी तरह अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम उनको फॉलो करते हैं. देयर इज नो रूलिंग्स फॉर इर्रेगुलर वर्ब्स. इसके ऐसे कोई उसूल कवायद नहीं है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना. ईट, एट, ईटन, खाना. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना. राइट, रोट, रिटन, लिखना. गिव, गेव, गिवन, देना. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, कार चलाना. Forget, forgot, forgotten, भूल जाना. Take, took, taken, लेना. See, saw, seen, देखना. Fall, fell, fallen, गिर जाना. In all these examples, you see one common thing, that is all 3 forms are different. Now the second type of irregular verbs. Here in this case, first form is different, second and third are same. Buy, bought, bought, खरीदना. Catch, caught, caught, कोई चीज पकड़ना. Bring, brought, brought, कोई चीज लेके आना. Sell, sold, sold, कोई चीज बेच देना. Make, made, made, बनाना. Lose, lost, lost, खो देना, गुमा देना. Say, said, said, बोलना, कहना. Tell, told, told, almost similar. Stand, stood, stood, खड़ा होना. In all these examples you see one common thing, that is second form and third form are same, first is different. Now let's move on to the third type of irregular verbs. In this tribe all 3 forms are same. See, cut, 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 काटना. Put, 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 रखना.
bet 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 शर्त लगाना, read 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 रीडिंग करना. Here spellings are same but pronunciation differs. बोलने का तरीका अलग है, स्पेलिंग सेम है. क्विट 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 कोई चीज छोड़ देना, गिव अप कर देना. हर्ट 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 तकलीफ देना. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल्स वन थिंग इज कॉमन, ऑल थ्री आर सेम. नाउ द बिग क्वेश्चन, हाउ डू वी लर्न regular verbs and irregular verbs? In terms of learning regular verb, it is easy because we have got to know the rule. The rule is just adding ed will serve the purpose. But what about irregulars? Now the good news is in English language we do not have many irregular verbs. We have got only 200 plus irregular verbs, and the only way to learn them is to learn them by heart, is to memorize them. बस एक 200 irregular verbs है, एक ही तरीका है उनको सीखने का कि याद कर लेना उनको. We have got lists on internet and I will soon upload a video on my channel which will contain all the mostly used irregular verbs. मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा, वहां से भी आप सीख सकते हैं. सो एक लिस्ट याद कर लेना है. When it comes to regular verbs, we need to follow the pattern, the rules. As far as learning regular verbs are concerned, we need to follow the rule of ed ending. This brings to the end of our video. I hope you understood the concept. If you have any questions, feel free to ask me in the comment section. I will surely respond your questions over there. Take a very good care of yourself. Until the next video, Assalamu alaikum.